Good afternoon and a warm welcome to all our viewers on Doordarshan Sports as we bring you the 48th Senior Women National Handball Championship here at court number 1 at the Indira Gandhi Stadium. I'm your host Arjun and joining me is Sanjeev Datta as we're going to broadcast on Doordarshan Sports the first semi-final between Indian Railways and Delhi. Sanjeev, अगर हम प्रोग्रेस ही देखें सेमीफाइनल तक इंडियन रेलवेज का और दिल्ली का तो किस तरह का प्रदर्शन रहा है? देखिए अर्जुन, अगर हम इसकी बात करें, इंडियन रेलवेज की बात करें, तो लगातार विगत 3-4 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान पर रही है इंडियन रेलवेज। और इंडियन रेलवेज की अगर खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उनके 16 में से 8 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय रेलवे के रहते हैं। तो इंडियन रेलवेज एक प्रबल दावेदार मानी जा सकती है इस वरिष्ठ 48वीं वरिष्ठ हैंडबॉल चैंपियनशिप की। So like I mentioned earlier, there are 7 players on court for each team, total of 14 players. There are 16 players from each side, so that means a 9 substitutes opportunity is given. It's a 30-minute half. There are 2 halves with a 10-minute intermission. So it will be a fast game with 3 timeouts allotted for each side of 1 minute duration each. So plenty of action here at this 48th Senior Women National Handball Championship 2019-20 that we are bringing you on Doordarshan Sports. 48वीं वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जिसका कि आयोजन यहां पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। मैं संजीव दत्ता और मेरे साथ हैं अर्जुन चौधरी, मेरे साथी कमेंटेटर। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। Thank you, Sanjeev, and a warm welcome to our listeners and viewers on DD Sports as we bring you the 48th Senior Women National Handball Championship, the first semi-final between Indian Railways and Delhi, as the two sides are standing side by side along with their coaches as the officials shake hands, and we can see Winner Mishra, who is the General Secretary of the Northern Railways Sports Association, as I congratulate the players and wish them all the best for the semi-finals. और उनके साथ हैं अर्जुन अवार्डी नरेश पहलवान जी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं वेट लिफ्टिंग के मिस्टर A.K. स्रोही, जो कि भारतीय टीम के मुख्य कोच भी रहे हैं वेट लिफ्टिंग के काफ़ी सालों तक। और नरेश पहलवान जी जो कि अर्जुन अवार्डी हैं और गवर्नमेंट ऑब्जर्वर रहे हैं रेसलिंग के। सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए We are on court number 1 at the Indira Gandhi Stadium, which is an indoor court with both Indian Railways and Delhi standing side by side. For the Railways, the captain is Ujjwala and she is in jersey number 1. For Delhi, it is Sanjita in jersey number 5. And just briefly, the lineup for the Railways is Ujjwala, Monica, Deepa, Shrishti, Jyoti, Menika, Anubir, Shushma, Jyoti, Babita, Manjula, Kirti, Pavitar, Naina Shail, K. Santhia and Sonam. 16-member team. And for the Delhi side, you have Jyoti, Barkha, Ekta, Preeti, Sanjita, Tanisha, Pooja, Vicky, Uma, Jaya, Oyavanti, Sonam, Aarti, Shagun, Anu and Pinky. And everybody is assembled now for a photo opportunity. You have the two referees, the court referees who function both on court and the goal line, Anup Singh and Sukhbir Singh. और दोनों ही टीम्स के कैप्टन्स को उन्होंने मध्य में बुलाया मैदान के, और यहां पर टॉस की जाएगी। टॉस के बाद देखा जाएगा कि कौन सी टीम फर्स्ट नेट लेती है। तो यहां पर ये हुआ कि दिल्ली की टीम ने टॉस जीता है। Sanjita, the captain of the Delhi side, has won the toss, and Ujjwala, the captain of the Indian Railways, has lost the toss. The start of the match, and this is a throw off with Delhi now beginning. The match has now commenced. Duration is of 3 seconds only. Beyond that, the referee would call a foul. Trying to attack from the right wing and passing intercepted by Railways in the defense. And once again, just bouncing it on the court itself so that they're not caught in that 3-second rule. Passing from left to right to center. Good coordination for Indian Railways. And it's a pivot player, number 8, which is most important here. Trying to find a room and attempting to throw it, shoot it into the goal. And the referee just calls a foul there. Another attempt, number 6 to number 8.
Attempt by number 17 of Railways. Once again, whistle blown by the referee there. And a foul call, foul taken. Good passing and support by the Indian Railways. It is number 8, Shushma, who's playing the pivot here. As the players interchange position from wing to wing. And a tremendous score there by number 7, Anubir. With the score now being 1-0 in favor of Railways. बिल्कुल अर्जुन बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं भारत की ओर से, तो उनके खेल कौशल यहाँ पर देखता हुआ पहली ही बार में उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से गोल में परिवर्तित किया उस थ्रो को। और टाइम लिया गया रेफरी द्वारा, टाइम ब्रेक, और पुनः मुकाबले को सुचारू रूप से विशल के संकेत के साथ ही शुरू किया गया। दिल्ली के खिलाड़ी प्रयासरत हैं एक दूसरे को पास देते हुए। यहां पर बहुत देर तक उन्होंने अपने हाथ में गेंद को रखा। Sonam of Delhi just holding number 6 of Indian Railways. Attempt there by the Delhi girl, number 13, but blocked there by Indian Railways defense. बिल्कुल ब्लॉकेज बहुत अच्छा है भारतीय रेलवे की खिलाड़ियों का, कोई मौका नहीं दे रही है दिल्ली की टीम को कि वह कोई सफलता प्राप्त कर सके। रेफरी द्वारा पुनः विसल का संकेत। आप किसी खिलाड़ी को रोक नहीं सकते हैं, पकड़ कर रोक नहीं सकते हैं। प्रयास अच्छा था मगर गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई। Aarti of Delhi trying to throw and shoot into the goal, but blocked effectively by the back of Railways. Once again passing and support, number 13 trying to find the pivot player and passing it to the right wing. Called by the referee there, the court referee and the goal line referee, all interchanging their functionalities. Number 8, the pivot player for Railways, Shushma, passing and supporting from wing to wing. Possession is of 3 seconds only, and with 3 steps just outside that 9-meter arc, trying to find this opportunity, and this time blocked effectively by the Delhi girl. That was not a goal indicated by the referee, although the ball found its way into the net. Score is 1-0 in favor of Indian Railways. And a tremendous try there by the Delhi girl from the left wing, but blocked effectively by the goalkeeper. And a counter attack by the number 13 of Indian Railways. Tremendous performance. Pavitra, as the passing is being supported by the back and the forwards. Call the wing. Holding. Call by the referee. बिल्कुल पवित्रा द्वारा प्रयास बहुत अच्छा किया गया था और यहाँ पर येलो कार्ड दिया गया है। बार बार आप विघन डाल रहे हैं खेल में, तो उस चीज को देखते हुए रेफरी द्वारा संकेत दिया जाता है, कॉशन दिया जाता है कि आप गेम को सुचारू रूप से चलाएं, उसको बीच में रोकें नहीं। बहुत सुंदर पास था और यहाँ पर गोल में परिवर्तित किया बहुत ही सुंदर तरीके से। 1-1 बराबरी पर ले आए हैं इस मुकाबले को दिल्ली की यह खिलाड़ी। Aarti of Delhi, number 14, getting that equalizer. It's 1-1, finding space in that left wing, and Indian Railways bounces back, passing and supporting. Number 8, Sushma, and a weak shoot there by the right wing for Indian Railways, number 17, K. Santhia. Again passing from wing to wing, finding way, number 6 blocked effectively by Delhi number 4, Dhriti, but called by the referee there. यहाँ पर आपस में मंत्रणा करते हुए Penalty called. So it's number 8, Sushma, who's taking the penalty from the 7-meter arc. And almost blocked there, but Railways has now taken the lead 2-1. बिल्कुल गोल में परिवर्तित किया सुषमा ने। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, एशियन चैंपियनशिप और एशिया कप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी रणनीति बनाई हुई है भारतीय रेलवे ने, मगर उसको पूरी तरह से भेद रही हैं दिल्ली की यह खिलाड़ी। This time moving the ball to the left wing, losing possession there. 3-step, 3-second rule. Tremendous throw there to Sushma.
who has now scored the second consecutive goal. That pick and then shoot into the goal. 3-1 as Railways take the lead against Delhi. बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से गोल में परिवर्तित करने में कामयाब हुई सुषमा, भारतीय रेलवे की ये खिलाड़ी, बिब नंबर 8। Trying to make room there, the Delhi forwards, wingers, as they interchange the passes. Effectively blocked there, but called by the referee. And a foul taken. Pivot plays number 14 for Delhi, who is Aarti. Aarti has scored the only goal for Delhi so far. Bounces it on the court. And effectively blocked there by Railways, but referee calls there. Another foul. बिल्कुल, यहां पर आप पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते हैं, खेलने में बाधित नहीं कर सकते हैं। आप ब्लॉक करें, मगर आप पकड़कर ब्लॉक करना, उनको घसीटना या धक्का देना, ये पुशिंग करना, ये नियमों के उल्लंघन माना जाता है। रेफरी ने चीज को देखा। अनूप जो कि कोर्ट रेफरी थे, trying to make room there, number 5 for Delhi, who is the captain of the side, Sanjita, trying to make room. Counter attack by Railways, and once again the wingers have to go back. So you have all 6 players operating in offense and defense. A lot of energy required in this sport. 30-minute half with a 10-minute break in between. Intermission time. Sushma once again the pivot player, and a weak throw there, but effective block by the Delhi girls. तारीफ करनी होगी दिल्ली की इस टीम की कि सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना उनका सुरक्षा घेरा जिसे हम कहते हैं ना, वो बहुत प्रबल उन्होंने बना रखा है। Number 6 blocked by Delhi 14, Aarti. Foul call there by the referee. And she has to sit out now, which means that there are now 5 players instead of 6 who are playing. And a tremendous goal there by number 13 of Railways, Pavitra. As the score now moves on to 3-2. 4-1, and that is the accurate score so far. Sanjita of Delhi, the captain, trying to find room there, and the Railways defense way too strong for them, and a poor pass there by the pivot player to the left wing. अनुमान गलत था उनका, पास दिया, मगर पास अगर सही हाथों में दिया होता तो यहां पर जरूर एक परिवर्तित कर सकते थे, गोल में कनेक्ट कर सकते थे, मगर वहीं पर नुकसान हुआ। Sushma just being advised by her coach, you should pass and not go solo. You're allowed to hold for 3 seconds, 3 steps, and she finds a room, but finds a bar, unfortunately. It's a 2x3 meter goal, and another goal scored there just as we spoke. Has it been given by the referee? It should be 5-1, otherwise Railways leading 4-1 in this first half. 4-1 का स्कोर है अभी तक। अगर हम बात करें तो रेलवे ने 3 अंकों की बढ़त बनाई हुई है दिल्ली के विरुद्ध। Delhi also handicapped because of a 2-minute suspension on number 14 of Delhi, who is Aarti. So we have 5 players playing against 6 in this 2-minute duration. Outside that 9-meter arc. Interpassing. Number 5 of Delhi trying to find room. Sanjita, the captain. And good passing there. Sanjita looking for a way. Trying to find the wing, but loses the balance just outside that 9-meter arc. And another rule, Sanjeev, is that you're not allowed to enter the 6-meter arc. That is a realm only of the goalkeeper. बिल्कुल, सिर्फ गोलकीपर को ही अनुमति है कि वह अंदर 6 मीटर के अंदर बॉल को पकड़ कर भी वही खेल सकता है। Well, a timeout has been called now, which is for 1 minute. So each team gets 3 timeouts, and this timeout has been called. Delhi has called for that timeout, which means that they have now 2 timeouts left in this entire match. पहला टाइम आउट लिया था दिल्ली ने, और दिल्ली के प्रशिक्षक शिवाजी अपनी टीम को बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में किस बारीकियों का वह ध्यान रखे कि जिससे वह अपने जो अंकों का अंतराल है जो कम हो चुका है अभी तक, 5-1 का स्कोर चल रहा है पहले टाइम आउट से पहले,
तो अब उस अंतराल को कम करने की कोशिश है दिल्ली की, और देखना होगा रणनीति में कितना बदलाव करती है अब दिल्ली की टीम रेलवेज के विरुद्ध। पासिस बहुत अच्छे हैं अर्जुन। Yes, Sanjita, number 5, trying to find the pivot player. Blocked. Another opportunity. Finds a winger. Again blocked by the Indian Railways. Good offense showed by Indian Railways in the blue jersey. And the Delhi side resumes this progress of play. Sanjita passing it to number 9. Hits the crossbar off the net. Unlucky. Now possible counter attack. Sushma, number 8. Pivot player for Indian Railways as they interpass amongst themselves, and they have to do it quickly. Just outside the 9-meter arc. It is number 17 giving it to number 6 and finds a net there. The Indian Railways, Menika, number 6, as Railways take the lead 6-1 in this first half. बिल्कुल 6-1 का स्कोर हो चुका है अभी तक, और दिल्ली ने अपने जो गोलकीपर है उसको परिवर्तित किया है यहाँ पर। Neena Shell is now the goalkeeper, and she's also the India goalkeeper. Counter attack by the Indian Railways, number 17, and she scores. Tremendous run there by the Indian Railways. अर्जुन, दिल्ली द्वारा बार बार परिवर्तित करी जा रहे हैं टीम्स की। अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो 14 नंबर की जर्सी को बाहर किया और उसकी जगह उन्होंने 3 नंबर की जर्सी जो कि एकता है उसको अब मैदान में उतारा है। And the goalkeeper has been changed is Shagun, number 16 of Delhi. I would like to correct the statement made earlier, not Railways, but Delhi has made the change. Substitute, yellow card called. Is it a 2-minute suspension? With 5 players of Railways now manning the defense against the attack of Delhi. बिल्कुल अर्जुन, देखिए 2 बार येलो कार्ड दिखाया जा चुका था, तो अब यहाँ पर उनके खिलाड़ी को खेल में बाधित करने की वजह से 2 मिनट के लिए टीम से बाहर किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। 2-minute suspension called. Both the referees consulting. So from defense, Delhi has now moved on to the attack, ruled in favor of Delhi. This is a throw off where they pass. Unique game, finding a way there and intercepted effectively by the back of Indian Railways. It is number 5 of Delhi, who is a captain as well, Sanjita. Left armour, trying to find that angle right in. We have a substitution now for Delhi, number 14 coming in for Delhi, who is Aarti. बिल्कुल आरती को अब परिवर्तित किया गया है। देखना होगा यहाँ पर उनका परिवर्तन कितना लाभदायक होगा। अच्छा पास आरती के द्वारा गोल में परिवर्तित किया, बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छा पास आरती ने दिया, आते ही एक पास बनाकर मूव बनाया गोल के लिए। Sanjita, the captain of the Delhi side, finally making room and scoring, as Delhi has now moved on to 2, but still behind Railways, who are 7-2 ahead in this first half of 30 minutes. बहुत सुंदर तरीके से एक दूसरे को श्रृंखलाबद्ध तरीके से पास देते जा रहे हैं, मगर यहाँ पर रोका गया। डिफेंस बहुत अच्छा है दिल्ली का। Well, Shagun, who is the goalkeeper for Delhi, will now have to meet the penalty from the 7-meter line. And number 6 of Indian Railways has missed that opportunity. Menika given the penalty shot, but missing it from the 7-meter yard. So Railways still lead 7-2. And this time a block called by the referees. The 2 referees on court. And they are now interchanging the duties. It is Sukhbir Singh who's blowing the whistle, and the goal and line functionality is being seen by Anup Singh. बिल्कुल दोनों रेफरी एक दूसरे से मंत्रणा कर लेते हैं, आई टॉक होती है और उसके बाद निर्णय होता है। और यहाँ पर पुनः Good catch and block by number 8 of Indian Railways, Sushma. This fine feeding it to number 6 of Railways, Menika. Number 8 once again trying to find room. Number 17 blocked by Delhi effectively, but is it a penalty called by the referee? Bit of rough play that we are seeing there. Penalty has been called. So number 7 of Indian Railways will be given the opportunity. Anubir against Shagun, the goalkeeper. And a good block attempt by the goalkeeper, but a score by number 7 Anubir. And the score now moves on to 8-2
8-2 8-2 में परिवर्तित कर दिया। अभी तक बढ़त लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से पल प्रतिपल जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी अंकों में परिवर्तित करती जा रही हैं। तो अंक जो है गोलों में परिवर्तित करना बहुत बड़ी बात है। 8-2 का स्कोर हो चुका है। अभी तक बढ़त बनाने में कामयाब है। बहुत ही सुंदर तरीके से 13 नंबर की जर्सी ने पास दिया 6 नंबर की जर्सी को। प्रयास अच्छा था मगर यहाँ पर रनिंग बहुत ज्यादा दूर तक हो गई जिस वजह से गोल में परिवर्तित कर पाने में नाकाम रही। Well, another penalty has been called, and it's number 7 of Railways, Anubir. Another opportunity at scoring, and she does successfully against Shagun, who is the goalkeeper of Delhi. As the score now moves on to 9-2. Already 16 minutes have passed in this first half. 2 मिनट के लिए अभी पुनः भार किया एक खिलाड़ी को। तो यहाँ पर देखना होगा इनके खेल कौशल को। पासिस बहुत अच्छे। 6 नंबर की जर्सी ने प्रयास किया मगर उसको फिर रोका। 8 नंबर की जर्सी प्रयास अच्छे। यहां पर रेफरी द्वारा पेनल्टी दिया गया, येलो कार्ड दिया गया, येलो कार्ड दिखाया गया 8 नंबर की जर्सी दिल्ली की। Sushma has been shown the yellow card here, and it is Aarti from Delhi who is suffering a 2-minute suspension. पुनः एक प्रयास थ्रोस करने की कोशिश बॉल को। Number 6 of Delhi giving it to the left wing, again retrieving possession. Number 8 of Delhi trying to find room, but cut off by the defense there of Indian Railways. 6, 7 and 8 on the left back, and a poor attempt there by the Delhi side right over the crossbar. The score is still 9-2 into the first half with almost 17 minutes gone. Sushma in possession, playing the pivot role for Indian Railways as they pass from wing to wing. Indian Railways in the blue jersey, not keeping possession for too long, interchanging there just outside the 9-meter arc, trying to find room and blocked there by the Delhi side. दिल्ली के खिलाड़ियों के द्वारा ब्लॉक किया गया मगर यहां पर पास भारतीय रेलवे की खिलाड़ियों के द्वारा 17 नंबर से 8 से 13 और पुनः 13 नंबर की जर्सी को पास दिया गया। बहुत ही सुंदर प्रयास अच्छा था मगर पोल पर लगकर बॉल बाहर हुई, गोल में कन्वर्ट नहीं हो पाया यह प्रयास उनका। दिल्ली के पक्ष में यह बॉल। A left shoot from the right flank, and now Delhi is trying to counter attack, but Indian Railways defense is right at the back now. After the attack they come back to defense, finding room there. Number 8 blocked there by Indian Railways, but a foul call by the referee Anup Singh. Interpassing outside the 9-meter arc and effectively blocked there by Sushma of Indian Railways as she passes it effectively to number 17, and she scores. Tremendous counter attack there as K. Santhia of Railways scores point number 10 for Railways as they take the lead 10-2 in the first half. बहुत सुंदर पास दिया गया था, लॉन्ग पास दिया गया था, इतना लॉन्ग पास और उसको गोल में परिवर्तित करने में कामयाब हुई। अर्जुन दिल्ली की यहां पर मैं कमी कह सकता हूं, बहुत देर तक अपने बॉल को अपने पास रखते हैं। तो यहां पर अगर रेलवे की अगर हम बात करें, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे को पास दे देते हैं जिससे बॉल को वो रनिंग में रखते हैं, तो ये एक उनके लिए फायदेमंद चीज है। बॉल को ज्यादा देर तक अपने पास दिल्ली रोकती है जो उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है। Yes, so we spoke about the movement and dribbling rules here, but the movement has been slow, and we've seen the Delhi side retain possession for too long without much movement, even though they're allowed to hold for 3 seconds. But they're not moving enough, and that's easily being counter-attacked by Indian Railways. A penalty for Delhi. Sanjita, the captain, misses the left crossbar, and the ball not going into the net, but against the bar itself. An opportunity missed by Delhi, still behind by 2-10 in the first half. बिल्कुल नीना द्वारा गोल को रोक लिया गया। दिल्ली का प्रयास अच्छा था मगर हम कह सकते हैं जो उन्होंने शूट किया था वो बहुत शक्तिशाली एक वो नहीं था जिसकी वजह से गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई। प्रयास पुनः करने की कोशिश मगर यहां पर रेफरी की विसल के साथ ही बॉल दी गई। सुषमा, बहुत सुंदर 8 नंबर की जर्सी भारतीय रेलवे की सुषमा ने गोल में परिवर्तित किया। Well, that's not a goal because she had stepped into that 6-meter arc
and you're allowed to take off from outside the 6-meter arc. So it's still 10-2 in favor of Railways. It's not a goal. Number 6 of Delhi, and effectively blocked by the goalkeeper there. The defense also preventing number 6 of Delhi, Tanisha, from scoring. But a penalty called by the referee. Opportunity for Delhi, number 4, and unable to convert that. It is Preeti of Delhi, unable to convert. Good performance there by the goalkeeper of Railways, who hasn't really seen all that much action. Number 16, Nina Shell, who's also the goalkeeper for India in the yellow jersey. So you have the blue color for Indian Railways with a yellow for the goalkeeper. Now the interchange in the half of Delhi with a counter attack by Indian Railways as a lead 10-2 in the first half. 10-2 का स्कोर हो चुका है अब तक भारतीय रेलवे के पक्ष में। ये मुकाबला पूरी तरह से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे को पास देते हुए गोल में परिवर्तित किया इस बार। Tremendous score there by Sushma, number 8. We've seen her play the pivot role, but this time round, Sanjeev, she scored from the 9-meter arc and not between the 9 and the 6-meter arc. So that's a tremendous performance by Railways as they take the lead 11-2. The goalkeeper for Delhi has been changed. Now it is the one wearing number 1 jersey, Jyoti, for Delhi, who is now the goalkeeper. बिल्कुल अर्जुन, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि छोटी कदकाठी के भी खिलाड़ी हैं मगर बहुत अच्छा गोल करते हैं, गोल में परिवर्तित करते हैं, तो वो जंप उन्होंने उस तरीके से अपने खेल को इस तरीके से सुंदर तरीके से ढाल लिया है कि जंप लेकर इतनी हाई जंप लेते हैं, हाई जंप के बाद वह गोल में परिवर्तित करते हैं और अब हाइट का उनको कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं लेने दे रहे हैं लंबे खिलाड़ियों को। Well, another 2-minute suspension against Indian Railways. Number 17 out. It is Santhia. So we have 5 Indian Railways players against 6 Delhi players right now. As Sushma is about to start the game for Indian Railways with the goalkeeper number 16. Naina Shell also representing India as now move into the half of Delhi. Passing from wing to wing. Passing and support we are seeing in this handball semi-final. Sushma, the taller of the players, pivot player, finding room, giving it to the right wing. And a tremendous goal there by number 7 of Indian Railways. It is Anubit who has now scored another score, 12-2, as Railways take the lead in the first half. बिल्कुल 10 अंकों की बढ़त बना रखी है, 12-2 का स्कोर हो चुका है। कुल स्कोर की अगर हम बात करें तो बढ़त बनाने में कामयाब है पहले ही क्षण से भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी, यह टीम। एक सुंदर पास, दिल्ली की प्रयास बहुत अच्छा था, दिल्ली की खिलाड़ी का 6 नंबर जर्सी जिन्होंने यह गोल में परिवर्तित किया। और कुल गोल की बात करें तो 12-3 का स्कोर हो चुका है अर्जुन अब तक। Delhi number 6, Tanisha was scored. She found the opportunity there because there was no one to block, and for the first time I saw Sushma and her team not being able to defend against Railways. Picked up another point for Delhi as they're behind 3-12. A timeout has been called, which is second timeout in this game. बिल्कुल रेलवे द्वारा टाइम आउट लिया गया है। Yes, and right now looking at the score, 12-3, Railways up ahead with about 7 minutes to go into this first half, with Anup Singh and Sukhbir Singh, the court referees, calling the players back in. 1 minute timeout, that's allowed here. And Indian Railways players just catching a breather and catching a drink also. बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है, एक एनर्जी बूस्ट का भी काम करती है आपके कोच की, अपने प्रशिक्षक की राय, क्योंकि यहाँ पर आपको बाहर से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कोच, वह देखता है कि बारीकियों से देखता है कि किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करे टीम के यह खिलाड़ी, जिससे वो और अधिक अंकों का अंतराल जो है, गोलों का अंतराल जो है वो और बढ़ाने में कामयाब हो। और यहाँ पर यह मुकाबला पुनः शुरू हो चुका है। Pass from wing to wing, and number 9 blocked there of Indian Railways by the Delhi defense into that 9-meter arc. Foul call by the referee Anup Singh, and will it be a penalty? It is a penalty. Sushma number 8 given the opportunity to take the penalty against the goalkeeper of Delhi, who has just been brought into the match, and this time that throw hits the crossbar. लगातार 2 प्रयास मिले हैं अभी तक गोल में परिवर्तित करने के लिए सुषमा को, मगर उन
दोनों ही प्रयासों में उन पेनल्टियों को वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाई हैं। यहाँ पर एक अच्छे खिलाड़ी की एक सूझबूझ को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर वो परिवर्तित करती तो ज़रूर उनको सफलता मिलती। जल्दबाजी ज़्यादा रही उनकी यहाँ पर, जिस वजह से उनको नुकसान हुआ, गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई। और यहाँ पर अब बॉल जो है दिल्ली के पास। And a tremendous pass there with Sanjita of Delhi scoring as they're behind 4-12. Good pass there by number 6 to Sanjita of Delhi, who has now scored the 4th point for Delhi. And interchange of passes outside the 9-meter arc. 17 passing to 8. Sushma, who just missed a penalty. And another opportunity for her. And number 17, tremendous, saw the opening there on the right flank. Railways up 13-4. 17 of Railways. This is K. Santhia, who's made quite a mark in this match so far. बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से मैं कहूँगा रणनीति इतनी अच्छी है और उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही है भारतीय रेलवे की यह टीम। Railways also taking advantage of number 11 of Delhi being suspended, Jaya, for 2 minutes. So you have 5 versus 6 now. Delhi handicapped briefly with about 5 minutes to go in this first half. बिल्कुल, नियमों का उल्लंघन करने पर एक खिलाड़ी को कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए बाहर किया गया था खेल से, जिस वजह से यह भी एक कारण है दिल्ली के लिए लूज होने का। यहाँ पर अभी तक की बात करें तो हम। And Sushma blocking the Delhi shoot there of number 17 from Delhi, who is Anu. As Delhi take the foul. Bouncing in ball on the court. Remember, you can't hold it for more than 3 seconds or take 3 steps with the ball in possession. Sanjita of Delhi, the captain, passing it to number 6, but held by the defense of Railways as they take the foul once again outside the 9-meter arc. Another try attempt by number 6 of Delhi, Tanisha, unable to make room, hitting the player. And Sushma this time scoring. Is it a legitimate score? We'll have to wait and see. Yes, 14-4. One got the impression that they were inside that 6-meter arc, but the referee has ruled it as a score. 14-4. Railways up ahead, first half. बिल्कुल, पहले हाफ की अगर हम बात करें तो 14-4 का स्कोर अभी तक कर चुकी है भारतीय रेलवे की ये खिलाड़ी। अच्छा स्कोर है, एक मैं कह सकता हूँ इतना बड़ा अंकों का अंतराल उन्होंने, गोलों का अंतराल खड़ा कर दिया अपनी प्रतिद्वंदी टीम के लिए कि पहले तो उस गोलों के अंतराल को कम करना होगा, फिर विजय के बारे में सोचना होगा दिल्ली की टीम को। Yes, now Delhi trying to find room in that left flank. The wingers trying to attack. Number 6, Tanisha, once again blocked effectively by the Railways defense. Goalkeeper throwing it. And number 13 of Railways scores. It is Pavitra who has now scored another goal for Railways. 15-4 as they're up in the first half. Not much time left in this first half. 3 minutes to go. बिल्कुल, 26 मिनट से अधिक का खेल हो चुका है और अभी तक अगर हम बात करें तो 15-4 का स्कोर है। बढ़त बनाने में पल प्रति पल आगे है अभी तक भारतीय रेलवे की यह टीम। And that was number 13 Sonam, who has just been brought into the side, substituting number 17 Anu. And it is Sushma, number 8 of Railways, who is now facing a 2-minute suspension because of a foul. And a penalty will now be given to Tanisha, number 6 of Delhi, against Neena Shell, who is an India goalkeeper, so it won't be easy. And she scores. Delhi has got another score, 5-15 behind in the first half. और नियमों का उल्लंघन करने पर सुषमा को बाहर किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया 2 मिनट के लिए। एक बार उनको कार्ड दिखाया जा चुका था, येलो कार्ड दिखाया जा चुका था, चेतावनी दी जा चुकी थी पहले ही कि नियमबद्ध तरीके से खेले। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मुकाबले को सुचारू रूप से नियमबद्ध तरीके से खिलाएं। Effectively blocked by Delhi, this counter attack by Indian Railways as they tried to pass, and blocked by number 13. Penalty called, not penalty, foul called by the referee Anup Singh on court. Good passing. Tanisha unable to hold possession. Once again a foul called by the referee Anup Singh.
आप एकदम हाथ नहीं पकड़ सकते हैं खिलाड़ी का, बॉल को आप ले सकते हैं और यहाँ पर गोल में परिवर्तित करने का प्रयास था यहाँ पर, मगर असफल रही। उसमें तारीफ करनी होगी भारतीय रेलवे की इस गोलकीपर की, जो कि इंडिया टीम की भी गोलकीपर रही हैं। तो वो जो उनका अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेलों का, वो यहाँ पर आज के इस मैच में साफ दिखता हुआ गोलकीपर का। Nina Shell for the Indian Railways representing India, and a tough goalkeeper to score against. Number 6 of Railways trying to find room. Number 17 passing it to number 13, finds a room there. You have plenty of lefties in this Indian Railways side, and it is number 13 for Railways, Pavitra, scoring once again. 16-5 ahead in the first half. Not much time left. अर्जुन, यहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि भारतीय रेलवे की टीम को जैसे ही पासेज मिलते हैं और वो उनकी टीम में आने में कामयाब होती है तो गोल में परिवर्तित जरूर करती है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो मौके उनके पास बहुत आए हैं, उन मौकों को गोल में परिवर्तित कर पाने में बहुत कम तरीके से सफल हो पाई हैं। Another foul call by Anup Singh, the court referee. And Delhi takes it, trying to find room there. Tanisha finds the room. Does she score? Yes, she does. Tremendous score there as Delhi trying to claw back into this first half behind 6-16. बिल्कुल 16-6 का स्कोर हो चुका है अभी तक, और बॉल का एडवांटेज है अभी तक भारतीय रेलवे के पास। उनके हाथों में ये बॉल 8 नंबर की सुषमा, जो कि पास दिया 7 नंबर की जर्सी को, और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके एक त्रिकोणीय श्रृंखला में खेलती हुई, एक दूसरे को पास देती हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। अब नई खिलाड़ी 3 नंबर जर्सी की Ekta is in the side now for Indian Railways. She's just come into the court, and Sushma blocked there by the Delhi defense, playing the pivot role, passing it to Ekta. Ekta passing it to number 17 of Indian Railways and finds a net there. Tremendous score there by K. Santhia. She's made quite an impression in the semi-final as Railways up 17-5 in this first half with only 15 seconds to go. We have to wait and see when Anup Singh, the court referee, blows the whistle. Tanisha playing the pivot role for Delhi, trying to find room there. And the whistle has blown. The first half is now over. Railways lead 17-5 in this first half, 30-minute half. And now we have the 10-minute intermission. और इस टाइम आउट में आप बताते समझाते हो आगे की रणनीति के बारे में। You were just watching the first semi-final between Railways and Delhi, and the Indian Railways women's side has now taken the lead 17-5 in this first half of 30 minutes duration. We have the 10-minute break right now, otherwise called the 10-minute intermission of 10 minutes, and we are now joined by Chief Coach of India, Shri Mohinder Singh, who will tell us about Indian Railways' lead in this first half and what are Delhi's chances of coming back in the second half once the whistle blows. Mohinder ji, how would you see Delhi making a strong comeback in the second half? No, it is impossible for Delhi because in both aspects, in defense and defense, they are not doing better. So they are playing that they are puzzled. They are already, I think, lost the match. They have surrendered themselves. As compared to railway team, they are playing much better in defense. They are more aggressive, although they have missed so many through-on goals, 7 meters also. But still, they are playing aggressive, and it's a home ground, and they are organizing. They are showing their potential, their skills, their tactics, and they are getting goals. Looking at the score right now on the scoreboard, it's 17-5, but there are 2 bonus for Railways. What does that mean? Yeah, not bonus. You can say they stop. They overthrow the 7 meters and they are scoring more goals. Now I feel that now they will score more goals. Now the lead is you can say 12 goals. It will be more. It will be more than 25. They will score more goals. Now they are more aggressive and they are all paid. They are selected from all over the India. They are also feeling insulted while sitting outside. Now their coach is also putting pressure on them to score more goals and try to defeat in a good margin. So now the second half is about to begin with the 10-minute break almost over. We'd like to thank our chief coach for India, Shri Mohinder Singh, for talking to us for this first semi-final between Indian Railways and Delhi at this 48th Senior Women National Handball Championship 2019-20, which is being held at court number 1 at IG Stadium. The second half has now commenced, otherwise called a throwback or a free pass, which
Indian Railways enjoys interpassing now as a lead 17-5 at the end of the first half. And Sushma, number 8, playing the pivot role for Indian Railways, trying to find room outside the 9-meter arc, giving it to number 13, passing it to the left wing and blocked there by the Delhi defense. बिल्कुल दूसरे हाफ का ये मैच शुरू हो चुका है और बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक 17-5 से भारतीय रेलवे की ये टीम, जिन्होंने 17 गोलों में परिवर्तित किया है। और एक प्रयास बहुत अच्छा, यहां पर पासिस बहुत अच्छे थे, गोल में परिवर्तित करने में कामयाब हुई। 18-5 का स्कोर हो चुका है अब तक। अर्जुन अगर हम कहें कि दिल्ली की टीम ने आत्मसमर्पण कर दिया है भारतीय रेलवे के सामने, कोई मौका नहीं दे रही है भारतीय रेलवे की ये महिला खिलाड़ी कि कोई लाभ उठा सके दिल्ली की टीम। Effective block there by Indian Railways, and the earlier score was by number 7 Anubir of Indian Railways, as they're now taking the lead 18-5 and scored that additional goal in this second half. Number 17 of Indian Railways out because of a 2-minute suspension. A penalty has been awarded to Delhi, number 6 Tanisha, against the goalkeeper Neena Shell, and effectively saved there by the goalkeeper. As Mohinder Singh, the chief coach of India, spoke in the interview earlier, the goalkeeper has to play a very important role in this handball match. Interchange there, Sushma passing it to number 13 of Indian Railways, trying to find room. Sushma, this time passing it to the left wing. Once again finding room and scoring effectively. With the score now moving on to 19-5. बिल्कुल बहुत ही सुंदर गोल में परिवर्तित किया, पास बहुत अच्छा था, जंप बहुत अच्छी ली, पूरी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पावर जनरेट करते हुए गोल में परिवर्तित किया। यहां पर तारीफ करनी होगी इन खिलाड़ियों की। Tremendous stop there by Neena Shell, but could not prevent the second attempt into a goal, as Delhi have now moved on to 6, Railways 19. अर्जुन, जहां पर प्रयास बहुत अच्छे हैं भारतीय रेलवे के, मगर डिफेंस की अगर मैं बात करूं दिल्ली की टीम की, तो डिफेंस उनका बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है अभी तक। Yes, they also tired, fatigued, and as Mohinder Singh, the chief coach of India, observed that the fallback has been very poor. The recovery after the attack, coming back to defense, number 13 passing it, winning possession back of Indian Railways, trying to find a room now to score, and she does. It is number 6 of Indian Railways, Menika, finding the net for Railways. The score now moves on to, it should be 26. We'll have to wait and see how the scoreboard is updated. And another tremendous attempt there into a score. Number 7, Anubir. We had 2 consecutive scores there. It's 26 now. Will it be 21-6? 20-6 का स्कोर हो चुका है अब तक। अगर गोलों की बात करें तो 20 गोलों में परिवर्तित कर चुकी है भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी। डिफेंस बहुत मजबूत है भारतीय रेलवे का, कोई मौका नहीं दे रही है दिल्ली की खिलाड़ियों को कि वह लाभ उठा सके। यहां पर प्रयास उनका सफल रहा। Sanjita of Delhi, left arm shoot into the goal as it's 7:20 now. Recovering, Sanjita was the captain of the Delhi side as a fallback. And it is now the counter-attack of Indian Railways. Sushma trying to find room there, passing it. Number 6 finds the room, and another goal there by number 7, Anubir of Indian Railways. 3 consecutive goals so far, 21-7 into the second half. Already 5 goals have been scored by the Indian Railways. Delhi trying to counter-attack right now inside that 9-meter arc, and tremendous stop there by the goalkeeper Neena Shell of Railways. कोई मौका नहीं दे रही हैं भारतीय रेलवे की ये गोलकीपर नीना शैल, पूरी दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं गोल के। तो ये एक हम कह सकते हैं उनकी अच्छी खेल कौशल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का उनका जो अनुभव है यहाँ पर आज साफ दिखता हुआ उसको पूरी तरह से अप्लाई कर रही हैं। Penalty called by the referee, so it's number 5, the captain Sanjita of Delhi taking the penalty against Neena Shell, the goalkeeper, and attempting to block the deflecting in through the goal. A disappointed goalkeeper, but Delhi's score now moves on to 8-21 behind in the second half. बिल्कुल हाफ टाइम के बाद 2 गोलों में परिवर्तित कर चुकी है अभी तक दिल्ली की टीम। Interchange of passes there in their attack just outside the 9-meter arc. Sushma passing it, losing possession, counter attack by Tanisha of Delhi.
finding room. And will Tanisha throw? No. Will she try to pass? She does to the captain, number 5 of Delhi, Sanjita. Once again interchange with Indian Railways successfully falling back, coming back into the defensive formation. Number 14 of Delhi passing it to the pivot player, trying to find room outside the 9-meter arc. And number 13 of Delhi passing it to number 5 of Delhi, the captain, but losing possession there. So once again, good recovery by Indian Railways. बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय रेलवे की यह महिला खिलाड़ी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से गोल में परिवर्तित कर रही हैं और पासिस बहुत अच्छे हैं, डिफेंस बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा है अपने इस मुकाबले को उन्होंने दिल्ली के विरुद्ध। And a tremendous score there by number 13 of Railways, Pavitra, giving a deceptive pass to her player, but the defense not able to read it as she scores. It's 22-8 in favor of Indian Railways. Tanisha, number 6 of Delhi, finds a room and effectively stopped by the goalkeeper Neena Shell of the Indian Railways. Outside the 9-meter arc as they interchange passes. Tanisha, who's playing the pivot role here. And losing possession there. Good counter-attack there by number 6 of Indian Railways. Tremendous goal there. Menika of Indian Railways taking the score to 23-8 into the second half. बिल्कुल, और यह बात समझी भी जा सकती है कि सैफ गेमों में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। जूनियर इंडिया टीम की कैप्टन भी रही हैं अर्जुन, यह खिलाड़ी भारतीय रेलवे की 6 नंबर जर्सी में। That was an intercept there by Menika as he managed to score. And this time effectively blocked by number 17 of Railways, K. Santhia, who's also scored quite effectively for the Indian Railways side. Delhi trying to find room there. Tanisha passing it to number 4 of Delhi. It is Sanjita losing possession, captain of the Delhi side. And we have seen her score quite effectively with her left arm shoots. Interchange of passes. Tanisha looking for room. And losing possession there. पास देने में बहुत देरी करी और दिया भी पास तो बहुत सही ढंग से नहीं दिया। आपने खिलाड़ी के हाथों में अगर देते तो जरूर गोल में परिवर्तित होता, मगर यहाँ पर एक बहुत सुंदर मगर बहुत तारीफ करनी होगी भारतीय रेलवे की खिलाड़ियों की बहुत तेजी के साथ। Well, if you look at the rally of passes there from the goalkeeper to Sushma all the way to Menika, who scored in a 3-pass format. They were able to score 24-8 now, and that is a superiority that we've seen from Indian Railways. Good recovery and then fallback, coming back to the defensive position. Delhi trying to find the attack formation now. Tanisha playing the pivot role. Number 17 of Delhi giving it to number 10. Outside the 9-meter arc. Tanisha looking for an opportunity and losing possession there. Good defense there by number 17 of Indian Railways, K. Santhia. बिल्कुल डिफेंस बहुत अच्छा भारतीय रेलवे का, कोई मौका नहीं दे रही है दिल्ली की खिलाड़ियों को कि वह कोई लाभ अर्जित कर सके। एक लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे को पास देते हुए और यहाँ पर डिफेंस उनका बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर गोल को रोकने में कामयाब रही। Neena Shell of Indian Railways, goalkeeper for India in that yellow jersey, effectively blocking, but a penalty has been awarded by Anup Singh and Sukhbir Singh, who are the court referees. So Delhi number 17, Anu, takes a penalty. And a poor throw there, just outside the left rim. So no score there for Delhi, behind 8-24. 24-8 का अंतराल है अभी तक। अगर हम बात करें दिल्ली की तो बहुत पिछड़ती गई हैं। पहले ही क्षण से, पहले ही हाफ से वह बहुत धीमी गति से खेल रही थी, मगर वहीं बहुत तेजी का प्रदर्शन करती हुई भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे गोल में परिवर्तित करती जा रही हैं अपने हर प्रयास को। तो यहाँ तारीफ करनी होगी भारतीय रेलवे की इन महिला खिलाड़ियों की। Tanisha doing well to recover possession there, trying to keep the ball in play and effectively blocked on the left wing by the Indian Railways defense. Tanisha interchanging, passing and support there, and a good intercept by Sushma as she passes it to number 13 and scores effectively. It is Pavitra of Indian Railways benefiting from that pass from Sushma in that counter attack. It is 25-8 into the second half.
बिल्कुल पवित्रा की अगर मैं बात करूं अर्जुन, 2018 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी इनको खिताब मिला था। तो इनके खेल कौशल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बेस्ट प्लेयर ऑफ रही हैं वर्ष 2018 की। We can see fatigue now into the Delhi side. Number 17 has been substituted for number 8. And it is Pooja who is now into the squad for Delhi on court. And this time a counter-attack attempt. Sushma getting the pass there, but called by the referee, Anup Singh. Sukhbir, who is on the railway side of this court. Neena Shell, the goalkeeper for Indian Railways. The number 13 now being substituted for Indian Railways. Pavitra scored earlier. Number 5 in Jyoti, given the opportunity. The lead has now extended to 25-8. ज्योति भी, जो कि अभी सैफ गेमों में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, भारत का स्वर्ण पदक आया था नेपाल में, जो कि सैफ गेम हुए थे। Well, effectively blocked there. We'll have to wait and see what Anup Singh, the court referee, rules. Was it rough play? And will a penalty be awarded? It is. So it is number 4 of Indian Railways given the opportunity. Shrishti, who will be taking the penalty against number 1 of Jyoti, the goalkeeper. An effective block there by the goalkeeper. She may be very short in height, but managing to use her right foot सूझबूझ बहुत अच्छी थी to उनकी, prevent a goal. और गोल को रोकने में कामयाबी हासिल करी उन्होंने, दिल्ली की खिलाड़ी ने। और यहीं पर पास, वही बात है कि पास जो है समय पर नहीं जाते। अर्जुन, यहाँ पर बहुत समय व्यतीत करती हैं दिल्ली की खिलाड़ी, अपने हाथ में बॉल को ज़्यादा देर तक रोकती है, जिस वजह से उनको नुकसान हो रहा है यहाँ पर। Yes, the training is for 3 steps and 3 seconds while they hold in possession. So it's very important for them to pass as often as possible. It also keeps the defense confused outside the 9 meters arc. Tanisha, who's played a very important role for Delhi so far, number 6, holding possession but effectively blocked by the Indian Railways defense right there. बिल्कुल, भारतीय रेलवे की 3-3 खिलाड़ी एक खिलाड़ी को रोक लेती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनकी सूझबूझ और रणनीति इतनी कारगर है कि वह प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दे रही है कि वो गोल में परिवर्तित कर सके अपने प्रयास को। Lob pass there, but Delhi losing possession. Tanisha once again in between, and it is the Railways, Neena Shell passing it to number 8 Sushma, who has been very effective with the long passes and the short passes. Number 17 of Indian Railways in possession, passing it back to Sushma as they form the attack formation. The fallback of Delhi has been impressive in this instance. Sushma looking for room, passing it to number 17 and effectively blocked there by the Delhi side. But number 5 of Indian Railways, it is Jyoti attempted, but a goalkeeper is saved for the second consecutive time. Jyoti of Delhi, who has been brought in as a substitute. The score is 25-8 into the second half. 17 minutes to go. 25-8 का स्कोर हो चुका है। इस दूसरे हाफ की अगर हम बात करें तो 12 मिनट से अधिक का खेल हो चुका है अब तक। बार बार उसी रणनीति में उलझ जाती है दिल्ली की टीम। बहुत अच्छा डिफेंस है भारतीय रेलवे का, यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी। उनके सभी प्रयासों को, दिल्ली के प्रयासों को विफल कर रही हैं। Tanisha regains possession and a tremendous goal there despite the blockages that we saw on the part of Indian Railways. Tanisha, number 6, scores for Delhi. 9:25 as Delhi still behind by 16 points into the second half. Number 5 of Railways passing it to Sushma, number 8, and the passing moving from left to right flank. Sushma giving it to number 9, number 17 passing it right back to number 4. Sushma passing it to that extreme left wing, intercepted effectively by Delhi. Will they fall back in time? They do, because the pass to the captain Sanjita was very late for Delhi and not able to take advantage of that intercept. बिल्कुल, बहुत अच्छा बीच में घुसकर बॉल को अपने पक्ष में खींचने में कामयाब हुई, लपकने में कामयाब हुई दिल्ली की यह खिलाड़ी, मगर उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाई हैं दिल्ली की यह खिलाड़ी। 8 नंबर जर्सी Tanisha once again trying to attempt a score, but we'll have to wait and see if she's able to. Number 13 blocked effectively by Neena Shell, the goalkeeper of Indian Railways, as she finds a way out. Just briefly, substitution. Ekta is going to come in for
number 17 of Railway Santhia, and number 4 also being substituted by number 6 of Indian Railways, Menika. It's not Ekta but Deepa, number 3, has been brought in for Indian Railways. बिल्कुल दीपा को परिवर्तित किया गया है और मैदान में है दीपा, भारतीय रेलवे की खिलाड़ी। पास दिया गया सुषमा द्वारा और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से पास देकर, एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बहुत सुंदर तरीके से दीपा द्वारा पास दिया गया। गोल में परिवर्तित करने की प्रयास था यहाँ पर 5 नंबर जर्सी ज्योति का, मगर उसको गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई। मगर यहाँ पर पुनः 6 नंबर जर्सी दिल्ली की। Good interception by number 5, Jyoti. And opportunity for number 6 as she scores. It is Menika who brings another score for Indian Railways. 26-9 into the second half. बिल्कुल बहुत सुंदर गोल में परिवर्तित किया। Number 5, Jyoti, has been substituted. Number 13, who is Pavitra, back into the squad, into the playing 6 on this court. And Tanisha must be tired for Delhi, playing the pivot role. बिल्कुल अर्जुन, एक बहुत अच्छी रणनीति है भारतीय रेलवे की, अपने खिलाड़ियों को तुरंत एक रेस्ट जो दिलाने का उनका तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक स्ट्रांग जो उनकी पवित्रा है उसको। And the captain Sanjita has scored, finding that gap with that left throw. Nina Shell unable to block it. 10-26, Delhi behind in this second half. Fall back by Delhi as Indian Railways just try to reform their attack. Passes from wing to wing, passing and support, trying to find room outside the 9-meter arc. And Sushma once again passing it from player to player. And Deepa losing possession there. Counter attack to Sanjita but unable to catch it from the defense. बहुत दूर का लॉन्ग पास उन्होंने दिया था, मगर लॉन्ग पास को कैच करने में कामयाब नहीं हुई दिल्ली की यह खिलाड़ी, रोक पाने में। और यहाँ पर बॉल अब भारतीय रेलवे की खिलाड़ी के पास। Sushma, number 8, playing the pivot role there, along with the remainder of the 6 on-court players, with the goalkeeper behind. And Deepa getting the ball, passing it to Sushma, finding room there but blocked. And this time it is number 7 attempt, Anubir, but hitting the crossbar of the goal, dimensions of 2 by 3 meters here. And it is Jyoti who is the goalkeeper for Delhi. Been fairly effective so far in the second half. Delhi behind by 10-26 with about 13 minutes to go into the second half. And Tanisha finding room. Will she be able to pass? She does. Number 4 of Delhi, Preeti, scores, also representing India, as Delhi score now moves on to 11 against Railways 26. बिल्कुल 26-11 का स्कोर, अब तक 26 गोलों को परिवर्तित कर चुके हैं और यहाँ पर एक अच्छे पासेज देती हुई एक दूसरे को भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी 3 नंबर जर्सी, 3 नंबर से 13 नंबर जर्सी को पास दिया, मगर यहाँ पर रेफरी अनूप द्वारा रोका गया, विसल का संकेत दिया गया कि आप खिलाड़ी को पकड़ नहीं सकते हैं, पकड़कर बाधित नहीं कर सकते हैं खेल को। और वहाँ पर फ्री पास दिया गया भारतीय रेलवे को। Sushma this time scoring, picking up a high pass at the height. Number 8 Sushma for Indian Railways. Score now moves on to 27-11. Good comeback as a fallback to defense positions. And Delhi once again reconstitute their attack with Tanisha, number 6, playing the main role for Delhi. Looks tired, fatigued. We're seeing a substitution right now. Number 2 of Delhi, Barkha, is now on the court. And Tanisha once again playing the pivot role there with the captain Sanjita passing from wing to wing. This time losing possession there, and it is Anup Singh who calls a foul because of pushing from behind, who is a goal and line referee right now, with the referees just interchanging functionalities. We have Sukhbir on the court, and both referees' consensus required for an effective decision. Number 17 of Delhi now comes in, Anu. Tanisha has not been substituted, has the ball just outside the 9 meters arc. She passes it to the captain, and effective stop by the goalkeeper Nina Shell. Once again, long pass intercepted by Tanisha. Will this be a counter attack? Will there be a fallback for Indian Railways? Tanisha, and blocked there by Sushma, number 8.
Sukhbir calls a foul in favor of Delhi. तनिषा के प्रयास बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़कर प्रयास करना चाहती हैं, मगर यहां पर पास जो था उनका विफल हुआ. Another long pass, number 13. And a goal there by Pavitra, but it was a pass by Sushma to Pavitra, which ensured a goal there. 28-11 into the second half. तारीफ करनी होगी रणनीति की, बहुत सुंदर रणनीति है अर्जुन इनकी. भारतीय रेलवे की खिलाड़ियों की पासिस बहुत अच्छे सटीक पासिस दिए जाते हैं, जिसको गोल में परिवर्तित करने में कामयाब हो रही हैं. Pavitra sprinting and picking up that pass, this time intercepted, and it is Anup Singh who calls that as a foul. Interchange of passes by Delhi outside the 9-meter arc. Poor pass there by number 17 to number 3 of Delhi, Ekta. Trying to find room there. Number 13 of Delhi. Back to the captain. And this time held by the Indian Railways back defence. Another foul call, this time by Sukhbir Singh, the court referee. बिल्कुल 20 मिनट से अधिक का खेल हो चुका है और इस सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो 28-11 का स्कोर है. 28 अंकों के साथ, 28 गोलों के साथ भारतीय रेलवे बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक दिल्ली के विरुद्ध. This time falling hard on the court. That was Ekta of Delhi playing aggressively in the second half. Brought into the side as the interchange pass, looking for that opportunity outside the 9-meter arc, and a weak throw at the goalkeeper Nina Shell, easily picked up. अर्जुन अगर हम बात करें तो रेलवेज ने जो पंजाब को क्वार्टर फाइनल में परास्त किया था 27-16, वो स्कोर अब तक इन्होंने दिल्ली को उससे बड़ा Long बना लिया pass है. there to number 13, and it goes in after hitting the crossbar. Tremendous combination between the goalkeeper Nina Shell and number 13 of Railways, Pavitra, and the score now moves on to 29-11. Yes, Sanjeev. बिल्कुल दोनों ही रेफरी आपस में मंत्रणा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, जो कमी बार बार उनको देखने को मिल रही है, चेताया गया उन्होंने उनके कोच को. Well, the coaches are also liable to be penalized by the court referee Sukhbir Singh and Anup Singh. Anup Singh just issuing a warning, and that's important here, with the Delhi side now reforming the attack, and there's a fallback by the Indian Railways, way ahead of Delhi 29-11 with about 8 minutes to go into the second half. And number 13 of Delhi passing into number 14, trying to find room, but effectively blocked by Indian Railways defence. Number 13 and number 6 of Indian Railways falling back into their defence position. And the ball is of the right size for women's handball, 54 to 56 centimeters in circumference, and it weighs anywhere between 325 and 400 grams. You have to run, move, dribble with that ball. Good passing there by Delhi, trying to find room. And it is Tanisha giving it to the captain, but poor pass there to Sanjita of Delhi as they lose possession. बहुत अहम रोल होता है. यदि आप अपने खिलाड़ी को पासिस बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, तभी आप अपने प्रतिद्वंदी को के गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं उन पासों को. तो यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज़ है कि आपके पासिस जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में सही खिलाड़ी के हाथों में जाएं. Well, Sushma has been substituted for Railways, and number 13, Pavitra, has also come out with number 11, Manjula of Railways, finding their way on court. So you have Deepa. Number 3, number 4 you have Shrishti. Number 6, Menika, as a try to find an opportunity against the Delhi offence, and the goalkeeper, but a foul call there by Anup Singh, the court referee. Interchange of passes from wing to wing, and we have a fresh set of legs there by number 4, who is Shrishti, and she scores effectively despite being blocked. Sukhbir Singh calls that goal. It should be 30-11 now. It is, according to the scoreboard.
and a good fallback by Indian Railways. बिल्कुल भारतीय रेलवे के लिए एक प्रशंसा का मैं कह सकता हूं, पूरी तरह से आत्मसमर्पण था कर दिया है दिल्ली की टीम ने अपने प्रतिद्वंदी टीम के सम्मुख। तो यहां पर प्रयास बहुत उज्जवल है उनके, मगर उन प्रयासों को गोल में परिवर्तित कर पाने में दिल्ली की टीम अभी तक बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसका उनको यहां पर नुकसान है। और यहां पर Number 4 of Indian Railways is suffering from a 2-minute suspension because of that call made by the referee. So a penalty awarded to Delhi. Number 14 will be taking it. Aarti of Delhi against Nina Shell, who is a goalkeeper for Indian Railways. Will she score? And she does. Good attempt there by the goalkeeper. So Delhi now moves on to 12:30. The scoreboard has not reflected it as yet. We'll have to wait and see. A line cut has been called. So Mohinder Singh, the chief coach of India, has indicated that it's not a goal. Railways maintain that lead of 30-11 into the second half. 5 minutes to go. Blocked there by the Delhi back. Sukhbir Singh, the court referee, calling that foul there. So it is number 9 of Railways, Jyoti. And a red card has been called against number 14. बार बार नियमों का उल्लंघन करने के बाद दिल्ली की खिलाड़ी 14 नंबर जर्सी को जो है रेड कार्ड दिखाया गया, आरती, जिनको कि अब यहां पर डिस्क्वालीफाई किया गया है नियमों का उल्लंघन करने के उपरांत। नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरीज की कि नियमबद्ध तरीके से खेल को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो बहुत ज़रूरी है यहां पर रेफरी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर आरती को बाहर किया। और यहां पर अब यह मुकाबला पुनः शुरू। Unfortunately, Aarti has suffered from a red card penalty violation and she's been sent off, which means that Delhi is now handicapped with 5 players only against 6 of Indian Railways. Number 11 of Indian Railways passing to number 6, Menika, and a wild throw off the crossbar. Effective blocking there by the Delhi defense. As 30-11, Railways ahead in the second half. बिल्कुल प्रयास बहुत अच्छा था, मगर अनुमान लगाने में नाकाम रही भारतीय रेलवे की यह है खिलाड़ी। और अब देखना होगा यहां पर दिल्ली के पक्ष में है ये बॉल, कितने परिवर्तित कर पाएंगी गोल में, क्योंकि 5 ही खिलाड़ियों से खेल रही हैं अभी। 13 नंबर जर्सी जो कि उनकी 14 नंबर जर्सी आरती को बाहर किया गया है नियमों का उल्लंघन करने पर। 5 ही खिलाड़ियों से खेल रही है अभी यहां पर दिल्ली की ये टीम, और गोल रोकने में कामयाब हुई भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी Nina Shell, effective stop there by the left arm throw of Sonam at number 13. But is a penalty awarded. Tanisha, number 6, pivot player for Delhi, will be taking it against Nina Shell, the goalkeeper for Indian Railways. And she scores. Good score. 12-30. Finds the net. बिल्कुल 30-12 का स्कोर हो चुका है। गोल में परिवर्तित करी अपनी पेनल्टी को उन्होंने पूर्णतः एक रूप दिया गोल का। The goalkeeper has now been substituted, Nina Shell, number 16, and it is number 1 for Railways, Ujjwala, the captain of the side, now into the playing 7. Goalkeeper has been substituted. Delhi forming their attack outside the 9-meter arc. बिल्कुल चोटग्रस्त हो गई हैं भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी गोलकीपर, जो कि परिवर्तित किया गया, और उज्ज्वला जो कि कैप्टन भी हैं भारतीय रेलवे की टीम की। और यहां पर उज्ज्वला गोल रोक पाने में कामयाब नहीं हुई। Tremendous goal there by Sanjita, number 5, the Delhi captain. And the score now moves on 13-21, finding that gap there. So a poor start there by Ujjwala, the captain of the Indian Railway side. And a counter goal there by the Indian Railways, bring it back to 32-11. 32-13 according to the scoreboard. बिल्कुल 32-13 का स्कोर हो चुका है अब तक। गोलों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा एक सेमीफाइनल देखने को मिल रहा है भारतीय रेलवे और दिल्ली के मध्य। और
Foul पेनल्टी call by the Sukhbir Singh, the court referee. A penalty awarded to Delhi. So it'll be Tanisha once again taking it, and she had scored in the previous penalty. Ujjwala, the captain goalkeeper of Indian Railways, and this time poor throw on बिल्कुल towards the left side of the crossbar. बिल्कुल So Delhi unable to score. बाहर से लगकर बाहर हो गई बॉल। उनका अनुमान बिल्कुल गलत था, जिसको गोल में परिवर्तित नहीं कर पाई दिल्ली की यह खिलाड़ी। और यहां पर अब यह मुकाबला चलता हुआ बढ़त बनाने में कामयाब है भारतीय रेलवे। अगर 32-13 का स्कोर है अभी तक। पुशिंग That is the captain, number 5, Sanjita, trying to make room, but intercepted by the Indian Railways defense. Ujjwala, the new goalkeeper for the Indian Railways, substituted in place of Nina Shell. Delhi trying to find room there outside the 9-meter arc. Tanisha once again, number 6, passing it to her left side, finding room there, blocked by Deepa of Indian Railways, number 3. Sanjita, good pass to Tanisha, unable to throw and blocked there. So it is Anup Singh, the court referee, awarding it to Delhi. Will there be a penalty? We'll have to wait and see. लगातार नियमों का उल्लंघन करने के उपरांत भारतीय रेलवे की 9 नंबर जर्सी ज्योति को बाहर किया गया। अभी तक 2 मिनट के लिए सस्पेंशन है उनका। Jyoti, number 9 for Indian Railways, because of that block, has been penalized with a 2-minute suspension off court. Tanisha passing it to her left side, and it is the captain Sanjita scores effectively. Score now moves on to 14-32. 32-14 का स्कोर हो चुका है और अभी प्रयास के लिए भारतीय रेलवे की यह खिलाड़ी आगे बढ़ती हुई एक दूसरे को पास देती हुई 11 नंबर से 5 नंबर। और यहां पर टाइम आउट, टाइम ब्रेक लिया गया है। There's no timeout called, just a minor break with Deepa passing it now and blocked by Tanisha of Delhi. Foul called by Anup Singh, the court referee, and a pass taken by Indian Railways. Number 4 of Indian Railways, Shrishti, trying to find room, passing it back and forth. Deepa trying to find room in that 6-meter arc and blocked there by the goalkeeper, Jyoti of Delhi. This time Sukhbir calls a foul and a penalty awarded to Indian Railways. Number 11 of Manjula of Railways will be taking the penalty now. And a poor throw, left armer over the crossbar. बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूं अनुमान तो गलत था ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यहां पर ये गोल में परिवर्तित कर पाएंगे। एक फेंट उनका अटैक था यहां पर। Plus she lost balance when she threw with her left arm, and sometimes you're looking for force and drive, but lose on accuracy. बहुत ज़रूरी है आप एकाग्र होकर अपना प्रयास प्रस्तुत करें। और यहां पर पुनः 6 नंबर जर्सी दिल्ली की तनिषा। Good score there by the captain Sanjita, number 5, as she received the pass and converted into a goal. 15-32. Delhi behind by 17 points into the second half. Not much time left, less than 5 seconds. We'll have to wait and see. Will they make it count now? Deepa blocked there by the Delhi defense and throwing it into the net. The referee has now called an end to this semi-final match between Railways and Delhi, with Railways winning 32-15, and the captain Ujjwala, along with the other goalkeeper Nina Shell, has been substituted, enjoying this moment as they move into the finals of the 48th Senior Women National Handball Championship. Who will they face? Himachal Pradesh or Haryana? We just saw the first semi-final between Railways and Delhi, with Railways winning that match 32-14 against Delhi, and as a result they've now moved into the finals of the 48th Senior Women National Handball Championship 2019-20, being held here at the Indira Gandhi Stadium, court number 1. The second semi-final will now be played between Himachal Pradesh and Haryana, and the winner of that match will then face Indian Railways in the final.